हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. So we were discussing yesterday 14.22 to 25. I miss Shri Radhika Mataji, Samaira, Bharti, they are in Vrindavan. Am I audible? So in 14.21, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से परे है उसके क्या लक्षण है. One who is in transcendental, divine, and how to, और हम तीनों गुणों के प्रभाव से परे कैसे जा सकते. This is what Arjun is asking. अर्जुन उवाच कैलिस्तत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतान् तृण गुणान् अतिवर्तते. Arjun inquired, O my dear Lord, by which symptom is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature? Then 22 to 25, Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha pravittim cha. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च. माता जी वर्ष नंबर It's 14.22 to 25. 14, 1, 4, 14, 22, 25. Shri Bhagavan Uvacha श्रीभगवानुवाच Prakasham cha pravittim cha. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च. Mohamev cha Pandava. मोहम् एव च पाण्डव. न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि. न देवष्टि सम्प्रवावृत्तनि न निवृत्तानि काङ्क्षति. न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवदासीनो गुणे. उदासीनि नव उदासीने उदासीन अवदासीनो गुणे. उदासीनवद् उदासीने गुणे. उदासीन अवदासीन. उदासीनवद दासीनो गुणैर्. उदासीनवदासीनो उदासीनि गुणैर् गुणैर् यो न विचाल्यते. यो यो न न विचाल्यते. विचाल्यते. गुणा वर्तन्त इति एवम्. गुणा वर्तन्त गुणावर्तन्ते इति एवम्. एवम् यो अवतिष्ठति नेङ्गते. यो अवतिष्ठति दीनि नेङ्गते. निगते. समः दुःख सुख स्वस्थ. समः दुःख समदुःख सुख सुखस्वस्थः. स्वस्थ समलोष्टं काञ्चन. समलोष्टं समलोष्ठन् काञ्चन. तुल्यप्रिय अप्रियो धीर. तुल्यप्रिय तुल्यप्रिय अप्रियो धीर. अप्रियो धीरस्. तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति. तुल्यानिन्दा निन्दात्मसंस्तुति. मान अपमान यो सुतुल्य. मानपमाननश्चो तुल्यस्य. तुल्यो मित्र अरिपक्षयो. तुल्यो मित्र तुल्यो मित्राय पक्षयो. सर्वारंभ परित्यागी. सर्वारंभ प्रतियागी. परित्यागी. गुणातीत स उच्यते. गुणातीत स नातीतः च उच्यते. उच्यते.
the Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandava, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present, nor long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material form, remaining neutral and transcendental. Remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and undesirable, who is steady, dhira, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. Purport by His Divine Grace, Srila Charnaravind Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Arjun submitted 3 different questions, like what are the symptoms of one who has gone beyond the modes? What is his behavior? And how does he transcend the mode? And the Lord answers them one after another. In these verses, Krishna first indicates that a person transcendently situated has no envy and does not hanker for anything. When a living entity stays in this material world, embodied by the material body, it is to be understood that he is under the control of one of the 3 modes of material nature. When he is actually out of the body, then he is out of the clutches of the material modes of nature. But as long as he is not out of the material body, he should be neutral. He should engage himself in the devotional service of the Lord so that his identity with the material body will automatically be forgotten. When one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. But when one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. One does not need this material body, and he does not need to accept the dictations of the material body. The qualities of the material modes in the body will act, but as spirit soul, the self is aloof from such activities. How does he become aloof? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. Thus, transcendently situated, the devotee becomes automatically free. He need not try to become free from the influence of the modes of material nature. The next question concerns the dealings of a transcendently situated person. The materially situated person is affected by so-called honor and dishonor offered to the body. But the transcendently situated person is not affected by such false honor and dishonor. He performs his duty in Krishna consciousness and does not mind whether man honored or dishonored. He accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. Otherwise, he has no necessity of anything material, either a stone or gold. He takes everyone as his dear friend who helps him in his execution of Krishna consciousness, and he does not hate his so-called enemy.
he is equally disposed and sees everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with the material existing. No, nothing to do with material. Social and political issues do not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbances. He does not attempt anything for his own sake. He can attempt anything for Krishna, but for his personal self, he does not attempt anything. By such behavior, one becomes actually transcendently situated. All glories to Srila Prabhupada. And in the next verse also, Bhagavan is speaking the essence again. Mamachayabhyabhicharin bhakti yogena sevate sagunan samrityaitan brahma bhuyaya kalpate. Just don't show that. I'm just discussing from here. So then, in one line, Krishna is saying, who goes beyond the modes? 14.26. Mamachaya abhyabhichari bhakti yogena sevate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman, this becomes Krishna conscious. I'm discussing the previous verse only. I just shared the translation of this verse. Shwatmika, I think slideshare not required. I'm not going to the verse in detail. Next time we will take that 14.26. So Krishna is telling so clearly, because in 14.20 to 25, there's so much description, detail. Man, apaman, labh, hani, mitra, shatru, pravitti, nivritti, moha. It doesn't care udasin, navadasin, tulya. He equally treats priya, priya, ninda, atma sanstuti. And one line answer Krishna is giving in the next verse. One who is constantly engaged in my devotional service, unfailing in all circumstances. Avyabhichari. Vyabhichari means one who has. Vyabhichari means unchaste. So actually, we all belong to Krishna. So we should be chaste and loyal to Krishna. So one who is chaste to Krishna, rendering devotional service unfailing in all circumstances. Such a person, even within the body, is not under the influence of the mode. That detail only Krishna is giving in these three verses, that you are in the body. You cannot get out of the body. As soon as the Jivatma takes a body, he comes under the influence of the modes of material nature. Because it's a material body. Soul is in material body, so modes of material nature will act. Now the person has to be neutral to that. Means person has to understand Sambandha Jnana. What is lacking in people's life is Sambandha Jnana. We are in ignorance. Tamas. Asutoma Sadgamme, Tamasoma Jyotirgamme. What is that Jyoti? That is the knowledge of Bhagavad Gita. So when this Sambandha Jnana arises, that I am not material body, I am spirit soul, I am eternal part and parcel of Krishna. When this Sambandha Jnana awakens in the heart, then even if the person is in the material body, he's not acting as per the dictates of the mind and senses. He's acting in full Krishna consciousness. Because every action such a person does, he knows its relation with Krishna. So you'll see the activity I'm doing, whether it will make me progress in Krishna consciousness, whether Krishna will be happy with this or not. That's the meaning of being Krishna. Like a obedient child is concerned, like the kind of behavior I'm doing, whether my parents, I'm adding to their honor, my parents, and like Krishna is the supreme, aham bij pradapita. So if we are doing activities that are sanctioned by Krishna and that are meant for Krishna's pleasure, will actually bring pleasure and satisfaction in our life. Because Krishna, Bhagavan Shri Krishna,
is our ever well-wisher. Krishna says in 5.29, Bhuktaram yajna tapsam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shanti pritchati. So he is the suhrid. Means unconditional love and care Krishna provides. Huh? So remains neutral. He should be neutral. So we cannot say that's why seasonal changes like winter, summer, same way, happiness and distress related to the body will keep coming as per the karma cycle. One need to learn to tolerate the dualities and be fixed up in his duties in Krishna consciousness. Krishna says, Matra sparshastu kaunteya, shitoshna sukha dukkada, agam apayana nityas tam titikshasva bharata. So titikshva, we keep fighting with the situations, but we have to find a way within the situation. Sometimes, like somebody is born with a health issue, later in life meets some accident, or somebody planned everything nicely, but things goes other way. So we should not get disturbed by the honor and dishonor, by the success and failure in this world. We have to do our duty in Krishna consciousness. Results Krishna will take. When we become attached to the results, we are not able to perform the duty. These lines are very important. He should not, because as long as he is not out of material body, he should be neutral. He or she. Such a person should engage himself in the devotional service of the Lord. So like people think they have to first get out of the material concept of life. Positive engagement in Krishna consciousness will automatically make one free from the effect of the modes of material nature. So it's not that if somebody okay by his own, nobody can come out of the influence of the modes of material nature. Why? Because Devi Yeshugunmai Mammaya Duratya Mamevi Prapadyante Maya Matam Tayanti. On our own, we cannot come out of the modes. We have to surrender to Krishna. Means we have to act in Krishna consciousness, as mentioned in Bhagavad Gita. So when, like, it's like I've given the well and rope example. When we catch hold of that rope of Guru Sadhu Shastra, then automatically we are coming up. When we are coming up, our consciousness is getting elevated. Then there is no scope of acting in the lower modes. So until unless we hold to the higher, we cannot give up the lower. Action will be there. Soul cannot be inactive. But when we shift our activities from material consciousness under the influence of mind and senses to Krishna consciousness, our Chaitana gets elevated. That's elevation in Krishna consciousness, one of the small books by Srila Prabhupada. Okay, I'm telling. So when one is conscious of the material body, this is the disease situation. Then all our actions for sense gratification. कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा है मेरे long term के लिए अच्छा है क्या नहीं. This is Shreyas Preyas game. So one should not act for sense gratification, pseudo identifying with the material body. When one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. Atma Indra Prativancha, Tare Dhare Kamana, Krishna Indra Prativancha, Tare Dhare Prem. वेल और रोप का एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, गुरु साधु शास्त्र की बात का पालन करेंगे, तो अपने आप हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर शुद्ध सत्व डिवाइन ट्रांसेंडेंटल सिचुएटेड हो जाए. द क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल मोड्स इन द बॉडी विल एक्ट. प्रहलाद महाराज बोलते हैं, सोचने की बात है कि दुख बिना बुलाए आ जाते हैं जीवन में, तो क्या सुख नहीं आएंगे? तो जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ सुख दुख है उसका कोटा ऑलरेडी डिसाइडेड. तो इसलिए व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए. उसको कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए सोचना चाहिए. मीन शुड बी फोकस ऑन आवर ड्यूटी. कोई भी मौसम आए, सुख है दुख है भूलो नहीं, शरणे हरि नाम बोल रे, गाए गोरा मधुर स्वरे. So this should be our attitude.
स्पिरिचुअल तो हम इसलिए such a person in the present body also becomes Jivan Mukta. Such a soul is in the material body, but action is in Krishna consciousness. That's why he doesn't desire to, he's aloof. How? Because no, doesn't desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. लोग क्या होते हैं भोगा त्यागा, first they want to do so much sense gratification, then they say सब कुछ माया है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हाँ? लेकिन जो भक्त है वो तो ना अटैचमेंट है ना अवर्जन है, बिकॉज लव एंड हेट स्टोरी, लव नहीं होता है, लस्ट एंड हेट स्टोरी। तो लस्ट भी अटैचमेंट है, और जब हेट हो रहा है नहीं मिल रहा है वो भी फ्रस्ट्रेशन है। तो भक्त जो है ना इस एक्सट्रीम में पड़ता है ना इस एक्सट्रीम में पड़ता है। इज बेस्ट, सच अ सोल मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ द सिचुएशन बाय ऑफरिंग हिज एक्टिविटीज, ऑफरिंग ऑल हिज एनर्जी टू सर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उसको इसलिए जो बाकी लोग हैं ना वो तो पहले बहुत भोगा कर लेंगे और फिर बाद में बहुत रोना धोना चलता है, हाँ? इसलिए ये दोनों सिचुएशन से बचना है। तो भगवान ने जैसा बोला है वैसा करना है, तो फंसते नहीं है, देन वी डोंट गेट ट्रैप्ड। ठीक है, देन material security person is affected by the so called honor and dishonor offered to the body। इसलिए जब लोग हमको ऑनर दे तब भी हमको हाई नहीं हो जाना चाहिए, जब डिसऑनर दे तब भी लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का मौसम बदलता रहता है, जो लोग आज चढ़ाते हैं वही लोग नीचे गिराते हैं। सो डोंट मेक पीपल एज द डिसाइडिंग फैक्टर, कृष्णा शुड बी, जो मैं कर रही हूँ उससे भगवान हैप्पी हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान संतुष्ट हो गए तो सब संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे रहता है। इसलिए व्यक्ति को सच फॉल्स ऑनर डिसऑनर से नहीं होना चाहिए। ये भी भगवत गीता के शुरू के वर्सेस में भगवान बोल रहे, सुखेशु अनुद्विग्न मना दुखेशु विग्रत स्पीड। तभी हम सुख दुख में नहीं, तो दोनों सिचुएशन में हम सेल्फ में सिचुएटेड नहीं रह पाते, वी गेट कैरिड अवे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूड। रजस बढ़ जाता है या तमस बढ़ जाता है, एंड वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी। इसलिए जब ऑनर डिसऑनर आए तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई अप्रिशिएट कर रहा है, पास ऑन दैट क्रेडिट टू द सुपीरियर्स। ओके, मेरे माता पिता ने अच्छे से पढ़ाया है, गुरु कृष्ण का कृपा है, हाँ, उनकी वजह से हम कुछ आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर पा रहे हैं। अगर हमारा किसी को भगवत गीता देने से, श्लोक बोलने से उसके जीवन में वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे, नो पर्सनल क्रेडिट टू अस, इज अ मर्सी ब्लेसिंग bestowed upon us by the Vaishnavacharyas, by श्री गुरुदेव, श्री प्रभुपाद। कृष्ण की कृपा है। हमारे माता पिता, जो भगवान ने इतने अच्छे माता पिता दिए जिनकी वजह से हमको इतना फैसिलिटेशन मिल रहा है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं मनुष्य जीवन। तो आप पर्सनल क्रेडिट नहीं ले रहे, जब पर्सनल क्रेडिट नहीं लेते तो मिथ्या अहंकार नहीं आता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति बन जाता, देन यू डोंट गेट पफ्ड अप। पफ्ड अप पर्सन भी ड्यूटी नहीं कर पाता। बहुत अच्छा वर्स है, दोबारा से भी पढ़ना आज दिन में। ही एक्सेप्ट थिंग्स, हमारा क्या है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्ज। देखना है जो भक्ति के फेवरेबल है उसको स्वीकार कीजिए, जो भक्ति के अनफेवरेबल है उसको अस्वीकार कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग संसार को माया बोल के छोड़ देते हैं, नहीं, संसार तो कृष्ण का है ना। जब अपने लिए करते हैं तब माया है, हाँ? तब ट्रैप है, लेकिन जब कृष्ण के लिए करते हैं तब फंसते नहीं। अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है 10th को, जस्ट नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाचवी प्रतियाचे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है, प्रभुराज्ञाय मांगी प्रभुराज्ञाय भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्णेर संसार कोरी छाड़िया नाचार, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य हबे लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार कोरी छाड़िया नाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो हमको अनाचार मतलब शास्त्र विरुद्ध आचरण छोड़ना है और कृष्ण के लिए संसार करना। तो दैट्स व्हाई भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए कुछ भी स्वीकार करेगा, नहीं तो उसको पत्थर और सोने में कुछ
फर्क नहीं है, मतलब अटैच नहीं। He takes everyone his dear friend, जो भी उनको एक वास्तविक मित्र वो होता है जो हमको भगवान की तरफ, one who helps us in progressing in Krishna consciousness. That's our real. Last, social political issue doesn't affect because situation बदलती रहती है, फिक्स रहना चाहिए भक्ति में, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्यूशन जब तक लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक कलेश रहेगा। जैसे ही कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। So he knows and he does not attempt anything for his own sake. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से, तुम्हारा इच्छा है मोरा इंद्रिया चलाना, श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासना, निज सुख लागी किछु नाही करिया। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि मेरा जो है ना, मेरा आमार बलिते प्रभु आर किछु नाई, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई, धन दारा सुत सुता तब दासी दास। भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ठीक है, आप ही मेरा सब कुछ है। जो मेरा पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, ये एक्चुअली आपने मुझे सेवा दी और आपकी सेवा के रूप में मैं इनका सेवा कर रहा हूँ, ताकि ये लोग अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सके। तो मेरा घर जो है, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, सब आपके लिए कर रहा हूँ। आपको कॉन्शियस होके मैं अपने परिवार का टेक केयर कर रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस वैष्णव। फिर मेरी इंद्रियां जो है आपके हिसाब से चल, दिस इज हाउ वी कैन गो बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोड्स। ठीक है, तो लेटर अगेन जो हम सुनते हैं उसको सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, अप्लाई करना, तभी तो ध्यान होगा। मनन करना चाहिए श्रवण के बाद, मनन होगा, एप्लीकेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कॉन्शियस day, very nice words. He can attempt anything, but for his personal self, he does not attempt anything. Like Srila Prabhupada, कृष्ण के लिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इतनी वृद्धावस्था में 2 हार्ट अटैक सफर करके शिप वाले से श्रीमती मोरारजी देसाई बोली थी, बुढ़े हैं, मर जाएंगे आप वहां पे, इतना ठंडी है। बोले नहीं, मुझे जाना है, मेरे गुरु ने कहा। तो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि रख के उस एज में जब लोग वृंदावन में जाके, लोग सोचते ना ओल्ड एज वृंदावन चले जाते हैं, क्या पता कब प्राण निकल जाए। हाँ, वो उस एज में सबको वृंदावन देने के लिए इतने कष्टों को सह के अमेरिका गए। पर्सनल से एक नॉट इंटरेस्ट, अपना कंपनी फैमिली कुछ नहीं, कुछ नहीं, वानप्रस्थ आश्रम भिक्षुक का जीवन। हाँ, मतलब भगवान पे आश्रित जीवन, भगवान की इच्छा से जो मिलेगा उस पर। ठीक, एक प्रभुपाद मेरी वेल टू डू फैमिली, हाँ, तो अपना सारा मटेरियल कंफर्ट छोड़ा कृष्ण के लिए, और कृष्ण को पूरा जगत को देने के लिए इतना कष्ट उठाया। दिस इज द साइन ऑफ अ पर्सन हु इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड फॉर पर्सनल सेक, नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग anything for the material gain, but for Krishna's sake can take any risk. And Srila Prabhupada has done that, and we are forever grateful to Srila Prabhupada. यदि प्रभुपाद नहीं होते तो सब गड़बड़ हो जाता। ठीक है, okay. हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।